Some important measurements of anatomy subject. First is digestive tract 9 meter, pharynx 5 inch, larynx 2 inch, trachea 4 inch, esophagus 10 inch, stomach 15 centimeter because it is small intestine 6 into 2 means 6 meter and 2 centimeter, duodenum 25, jejunum 2.5, ileum 3.5. Obviously duodenum is small, so centimeter, otherwise jejunum and ileum is meter. Large intestine 2 into 6, exactly opposite to small intestine, 2 into 6, 2 meter and 6 centimeter. Colon 6 centimeter, vermiform appendix 20 centimeter. Colon 1.25 meter. Rectum 15, anus 5. Both are centimeter. Rectum is 15 centimeter, anus is 5 centimeter. Now liver, kidney, heart, lungs and other organs. Liver is 17 into 15 into 13 centimeter. Kidney is 12 into 6 into 3 centimeter. Heart is 12 into 9 into 6 सेंटीमीटर. नाउ किडनी जो है वो 3 की टेबल से बनती है, 3, 6 और 12. नाउ हार्ट जो है वो भी 3 की टेबल से ही बनेगा, 6, 9 एंड 12. नाउ अपेंडिक्स 4 इंच, स्प्लीन 5 into 3 into 1 inch. Spleen is in inch and spleen lies ribs 9, rib number 9, 10 and 11. Spinal cord 45 centimeter, vertebral column 60 centimeter, ureter 30 centimeter or 10 inch. Urethra. Now lung, right lung is 700 gram and left lung is 1600 ग्राम. यूरेथ्रा जो होता है वो मेल में 20 सेंटीमीटर होता है, फीमेल में 4 सेंटीमीटर होता है. यूरेटर जो होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है या 10 इंच होता है. थैंक यू. Other organs like fallopian tube, diaphragm, pancreas, gallbladder and alveolus, they all are small in size, so we use centimeter in unit and alveolus diameter in unit. Fallopian is 10 centimeter. We can learn from LO like 10, so 10 centimeter. Diaphragm 3.5 centimeter. We can learn from di, then 3, so 3.5 centimeter. Pancreas 2 की table, 2 into 4 into 20. Now tail is 2, neck is 2.5 and head is 3.0. Gallbladder 8 into 3 centimeter. Alveolus 200 diameter. Now CSF 720 ml per day or 0.5 ml per minute. Now gall juice 800 ml per day, pH is 7.7. Intestinal juice is alkaline in nature and it is 1.6 liter per day or 1 to 2 quarts per day. 1.5 liter per day is gastric juice. Gastric juice is 1.5 liter per day or 20 to 100 ml per hour. pH is 1.5 to 3.5. As we know, all intestinal juice is the alkaline in nature. pH is 7.2 to 7.4. Gastric juice infant में 5 होता है, adult में 1.5 to 3.5 होता है. Gall juice pH is 7.7 and CSF का pH 7.3 से 7.4 होता है. We know vagina is acidic in nature. 3.8 to 4.5 is nature. Vagina is acidic in nature. Now some important pH like blood 7.4, saliva 6.7, urine 6.0, stool 5.8 to 7.5, semen 7.2 to 8, vagina 3.8 to 4.5, esophagus 5 to 6. Now some important capacities. Newborn 30 ml and adult 2 to 3 liter for stomach. Now gallbladder 30 to 50 ml. Now CSF 150 ml and urinary bladder 300 to 400 ml. Now some important weight of organs are written as average
for all organs. Brain is approx 1400 gram or 3 pound or 1.4 kg. Heart is approx 300 gram. Lung, right lung is 700 gram. Left lung approx 600 gram. Spleen approx 200 gram or 7 ounces. Now kidney each approx 150 gram. Stomach approx 200 gram. Liver approx 1800 gram or 3 pound or 1.5 kg. Spinal cord 30 gram. Testis, each testis is 25 gram. Ovary, each ovary is approx 7 gram. Prostate approx 25 gram. Uterus approx 115 gram. Tongue is 70 gram. Pancreas 80 gram. Cerebrum 1.5 kg, as well as cranium is also 1.4 kg. Adrenal gland approx 6 gram. Pituitary gland approx 0.7 gram. Now you can see some conversion which is really important for conversion in weight and many more. So 1 ग्राम को जब हमें वंसेस में कन्वर्ट करना हो तो x जो भी आपकी वैल्यू है इन ग्राम अपॉन 28.34952, देन जब आप पुट करोगे तो आपको वैल्यू ऑन्सेस में मिल जाएगी. नाउ 1 ग्राम को आपको पाउंड्स में कन्वर्ट करना हो, लाइक LB में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली वही वैल्यू जो ग्राम में है उसका मल्टीप्लाई कर दो 0.0022 से, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो इन पाउंड्स में मिलेगी. अगर 1 पाउंड्स को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली x का इंटू 453 इंटू 592 में कन्वर्ट कर देगा आपको ग्राम में. नाउ 1 ऑन्सेस को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली जो भी आपकी वैल्यू है उसको 28.3495 से मल्टीप्लाई कर दो, देन आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो ऑन्सेस में मिलेगी. थैंक यू.